बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना है कि आप सब लोगों ने आज वर्किंग डे पर इस मीटिंग के लिए वक्त निकाला। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। मैं हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान आटवा, टोरंटो, वैनकूवर और मॉन्ट्रियल कौंसलेट जनरल्स की तरफ से तमाम मुअज़्ज़ज़ कम्युनिटी मेंबर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस इंटरेक्शन का मकसद कनाडा में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसलेट्स की मुहैया करदा सर्विसेज पर बात करना है। बड़े पॉलिसी इश्यूज पर शायद डिस्कशन ना हो सके। आज इस इंटरेक्शन में हमारे साथ निहायत ही मुअज़्ज़ज़ कम्युनिटी मेंबर्स GTA, विंडसर, आटवा, वैनकूवर, मॉन्ट्रियल से तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारिड़ साहब ओपनिंग रिमार्क्स और कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। कौंसल जनरल वैनकूवर, कौंसल जनरल मॉन्ट्रियल और हाई कमीशन आटवा के ऑफिसर्स जो हैं वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, सवालात के जवाब देंगे। आज के प्रोग्राम का एजेंडा उन सवालात तक महदूद है जो कम्युनिटी मेंबर्स ने हमें अपनी ईमेल्स में भेजे हैं। पहले हमारा ख्याल था कि हम चैट से भी कुछ सवालात ले सकेंगे, लेकिन अभी यूं लग रहा है कि ये सवालात की तादाद ईमेल्स वाले भी इतने ज्यादा हो गई है कि शायद हम उनसे ही इंसाफ कर सकें तो काफी होगा। आज मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ये हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारिड़ साहब की शायद आखिरी कम्युनिटी मीटिंग हो। कल उन्होंने एक बहुत वार्म लेटर लिखा है कम्युनिटी इन कनाडा को। हम उनकी लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये कम्युनिटी मीटिंग्स का आइडिया भी कनाडा में उनकी सरपरस्ती में शुरू हुआ। जिस तरह वो हमेशा कम्युनिटी के मसाइल के रेजोल्यूशन में ज़ाती दिलचस्पी लेते रहे और हमेशा कम्युनिटी के लिए एक्स्ट्रा माइल जाने की हिदायत देते रहे, वो मुस्तकबिल में भी हमारे लिए मशअल राह होगा। हमारी और सारी कम्युनिटी की नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। हम उनसे सिर्फ यही वादा कर सकते हैं कि उनके सेट किए गए हाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम इसी तरह कम्युनिटी की खिदमत जारी रखेंगे। और अब मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारिड़ साहब को दावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी अब्दुल हमीद साहब for your very gracious introduction and very warm welcome to all our compatriots. ख़वातीनो हज़रात, हाई कमीशन और जो कौंसलेट जनरल हैं ये यहाँ एक्सटेंशंस हैं हुकूमत पाकिस्तान की, और बहुत हमें कदर है जो आपके जो जज्बा हुब्बुल वतनी की और जो आपके तरह पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं और जिस तरह आपने हमेशा वतन अजीज़ की हर जो है पुकार पे लब्बैक कहा है, हर अपील को जो है वो हीड किया है। और ये वज़ीर आज़म साहब जो इमरान खान साहब एंड वेरी एबली असिस्टेड बाय फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, तो इनका एक ये विजन है और बड़ी एक क्लैरिटी है उनको कि जो हमारे बैरून मुल्क बहन और भाई हैं उनकी एक सही तौर पे करार वाकई कदर की जाए, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और उनको एक्नॉलेज किया जाए और उनको जो उनका मकाम जो होना चाहिए वो दिया जाए। और जो भी आपने यहाँ पे हमारी जो अदना सही देखी है ये इसी स्पिरिट में है, ये इन लाइन विद द विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई विद अ मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और हमने कोशिश की कि हम आपकी तवक्कुआत पे पूरे उतरें। और ये ज़ाहिर है एक जहद मुसलसल है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और मुझे यकीन है कि जो मेरे सक्सेसर हैं अमीर खुर्रम राठौर साहब, उनको भी वही लेवल ऑफ कोऑपरेशन मिलेगा जी जो मुझे मिल रहा है। बहुत मैं अच्छे सेंटिमेंट्स के साथ कनाडा से जा रहा हूँ और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो आपके बड़े मुस्तैद और फ़र्ज़ शनास और गुर्बे वतन
کونسل جنرل صاحبان ہیں عبدالحمید صاحب اور اشتیاق عاقل صاحب، جانباز خان صاحب، ان کو بھی اسی طرح سے آپ کی کوآپریشن ملے گی. یہاں پہ ایز اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ شہباز ملک صاحب ہوں گے قائم مقام ہائی کمشنر. ان کو بھی میں یہ یقین دلا کے جا رہا ہوں کہ وہ کسی قسم کی ان کو کوآپریشن درکار ہو تو وہ he will not find our countrymen lacking in that. تو یہ ہے جی کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور we look forward to another interesting informative session with you. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو فی الحال میں اتنے الفاظ پہ اتفاق کرتا ہوں، تو پھر میں کنکلوژن میں انشاءاللہ کچھ مزید کچھ عرض کروں. بہت شکریہ. over to Abdulhamid صاحب. Thank you very much, sir. And now, without much ado, we go directly to question answer session. First of all, I would start with the questions from GTA and Toronto. Saim Iqbal Saab ne humse pucha hai कि I would prefer to detail out during e-meet. My topic of choice would be on commerce and trade program assistance for Pakistan origin Canadians to promote inter-country trade between Canada and Pakistan. It's बड़ा वसी topic है, लेकिन briefly I would say कि the High Commission for Pakistan Ottawa and consulates in Toronto, Montreal and Vancouver are engaged in multi-pronged activities to promote trade between Canada and Pakistan. For promoting trade between the two countries, a trade and investment section has also been established in Consulate General of Pakistan, Toronto in July 2020. Earlier, it was in Montreal. Webinars on different export sectors have been arranged by Consulate General of Pakistan, Toronto, for creating awareness among the Pakistani business community in Canada. These webinars focused on food, textile, and leather sectors. The video recordings of these webinars are available on the Facebook page of our missions. Further, important relevant information about Pakistan, trade and investment and related events is widely disseminated among the community members who are in contact with the High Commission and consulates through email, Facebook, and Twitter. In addition, information about the Canadian import regulations and restrictions and the contacts of buyers and importers in different product sectors are being regularly shared with interested businessmen in Pakistan and Canada. The commercial section also acts as a bridge for Pakistani business community in Canada and connects them to leading Pakistani exporters in different product segments. Dr. Asad Aziz Siddiqui साहब पूछते हैं कि उनका सवाल है कि my question is regarding COVID-19 vaccination in Pakistan for dual national Pakistanis. My family is stuck in Karachi, Pakistan. I want them to get vaccine that is approved by Health Canada. My question is, how can they get Pfizer vaccine in Karachi, and what role Pakistan consulate is playing in this regard? इसका brief जवाब तो ये है जी कि as per the guidelines provided by the government of Canada, your family can enter Canada without vaccine as well. And of course, 5 जुलाई तक कोई भी खाब किसी को वैक्सीन लगी हुई है और नहीं लगी हुई, वो सब लोग जो हैं उनको क्वारंटीन का फेस करना पड़ेगा, जो यहाँ का रेगुलेशन है. 5 जुलाई के बाद का मुतालिक ये सवाल वैलिड है और उसमें मैं ये एश्योर कर रहा हूँ कि हमें आपने भी मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज मेड एन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर almost 13 million doses of COVID-19 vaccine from Pfizer. An exact timeline is not yet available, but it is being said that those would arrive by the end of 2021. While government of Pakistan is making every effort to facilitate all expatriate Pakistanis who are these days in Pakistan, we shall also draw your attention to Canadian government's promise to add certain other vaccines in its approved list. इस वक्त जो पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल है वो कैनेडियन गवर्नमेंट की अप्रूव लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की में वाली वैक्सीन नहीं,
ایون جو چائنا میں ہے, جو رشیا میں ہے, جو انڈیا میں ہے, وہ بھی نہیں ہے. اور جو کینیڈین گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن اس پہ آیا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ they are considering to add certain other vaccines also. Let's be hopeful. لیکن ویکسین ایز سچ ٹریول میں رکاوٹ نہیں ہے. ویکسین صرف مسئلہ ہے کوارنٹین کا. صرف یہ بعض اوقات کلیئرٹی نہیں ہوتی, میں کلیئرٹی کے لیے یہ بتا رہا ہوں. جام منیر صاحب بڑے پرومیننٹ کمیونٹی لیڈر ہیں اور ہمیشہ کمیونٹی کے ویلفیئر کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ what is the reason of delay for issuing NICOPs. تو اس کی ایک پوری سٹوری ہے کہ نادرا آفس in the Consulate General of Pakistan, Toronto was closed in April 2018 on the directions of Honorable Supreme Court of Pakistan. All Nadra related services have been shifted to online mode. We have also provided relevant links for Nadra where applicants can coordinate with the Nadra authorities. All of us can like to contact Nadra at id.nadra.gov.pk, and I repeat, id.nadra.gov.pk. اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ, اس ہمارے نادرا کے نئے ہیڈ بھی آئے ہیں اور ان کا بڑی اچھی شہرت ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ورلڈ وائڈ جتنے بھی پاکستانی آباد ہیں ان سب کو ان کے گھروں میں یہ فیسلٹی دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کو کسی بھی دفتر کے میں نہ جانا پڑے. اور اگر آپ کا کام اس طرح نہیں ہوتا تو اس میں نادرا کی جو ویب سائٹ کا میں نے ذکر کیا ہے اس پہ کافی سارے میکانزمس لکھے ہوئے ہیں کہ آپ ٹویٹر سے بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. 24 آورس آن لائن 24 آورس ٹیلی فون لائن اویلیبل ہے, اور چیٹ کے میکانزمس موجود ہیں. اور اگر ان سب سے کوئی نادرا سے آپ سروس لے رہے ہوں اور وہ نہیں پرووائڈ کر رہا ہے, کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہے, تو آپ وہ کیس وہ کمپلینٹ ہمیں بھی بھیج سکتے ہیں. ہم ان کو we will share those details with Nadra authorities and Nadra headquarters on your behalf. محمد نعیم ملک صاحب ہیں, یہ پاکستان بزنس ایسوسی ایشن آف ہیملٹن, یہ ہیملٹن میں بڑے ایکٹیو پاکستانیوں کی آرگنائزیشن ہے, اس کے سیکریٹری ہیں. انہوں نے ہمیں جنرل شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے ہمیں کونسولیٹ ٹورنٹو جو ہے انہیں اپڈیٹڈ رکھتا ہے ساری چیزوں سے. تھینک یو. اسی طرح انوار احمد صاحب نے بھی شکریہ ہی صرف ادا کیا ہے. مشتاق انجم صاحب نے تھوڑا سا ایک ایسا سوال پوچھا ہے جو عام طور پہ اس میٹنگز میں کا سبجیکٹ نہیں ہوتا. What will be the voting process of overseas Pakistanis? Now, as all of us know, that it's one of the fundamental policy issues for which certain decisions need to be taken in Islamabad. Once those decisions are taken, then at operational levels in embassies and consulate, we shall have details about various voting relating processes. اب جب تک وہ ڈیسیژنز ادھر پاکستان گورنمنٹ نہیں لے لیتی, ہمارے لیے مشکل ہے ابھی تک اس طرح کے پروسیسز پہ کچھ کمنٹ کرنا. ایس محمود الحسن صاحب نے کوشچن پوچھا ہے. First of all, a big thanks for giving us the opportunity to reach out to you to assist in resolving issues faced by overseas Pakistanis. How can the consulate help Pakistani pensioners in Canada draw their Pakistani pensions from banks in Pakistan? Banks in Pakistan don't respond or cooperate and simply ask for the pensioner to come to Pakistan to withdraw their pension. My mom is 81 and her checks are bounced because her signature don't match. We have emailed her National Bank of Pakistan branch manager few times asking as to what she needs as verification, but bank never responded. She can't travel to Pakistan anytime soon because of her multiple health issues, including heart failure. She was a headmistress in a governmental school in Pakistan and served the country for 40 years, and now she can't withdraw her pension. How can the consulate help in this regard?
very moving and justified email with valid facts. But I must say, in spite of this all empathy that I have, within the given framework of rules and procedures, the consulate will fully support the pensioner, or there is procedure to be followed to resolve the issue. Please, we will request you to ask your parent department for transfer of the pension to the Consulate General Pakistan, Toronto. The procedure is simple, where the pensioner requests the department from where he or she is withdrawing pension currently for transfer of pension in the embassy or consulate where she or she is residing. The parent department sends documents to the pensioner which are filled in the embassy or consulates and sent back to Pakistan. The relevant department then processes the paperwork and issues approval to the Chief Accounts Officer of the Ministry of Foreign Affairs, Islamabad. CO then accordingly grants approval of issuing pension to the pensioner. The bottom line is that it is doable to draw pension in Canada. However, it needs certain paperwork on behalf of the pensioner and a kind of patience with Pakistani rules. We would be at your disposal to facilitate at each and every step. ये निगार इस्लाम साहबा ने एक क्वेश्चन पूछा है. The overseas Pakistanis would like to know the achievements in hydroelectric dams and promotion of exports. What remains to be done in the field of accountability and control over corruption in Pakistan? Now, the second question is a kind of policy issue and policy question beyond the jurisdiction of embassies and consulates. The objectives of these community meetings is to focus on the services provided by the consulates and embassies. We shall request you to focus your questions only on the issues relating to the services provided by the High Commission and the consulates. But still, coming back to the issue of dams and exports, I would say that during the first 11 months of the current fiscal year, from July 2020 to May 2021, Pakistan's exports were around $22.6 billion, which is 8.6% higher than the export figures during the similar period last year. Last year, this figure stood at $20.8 billion after 11 months. Major commodities which witnessed export growth are textile. Textile exports increased 9.7% as compared to the last year. Leather manufacturers increased almost 12.9%. Chemicals and pharmaceutical products, their exports increased 4.9%. Engineering goods, 7.9%. Fruits, 7.9%. Meat and meat preparations, 15.5%. Interestingly, a very large increase was registered in export of spices, 22%. With respect to Pakistan's trade with Canada during the period from July 2020 to April 2021, Pakistan's exports to Canada reached $253 million, exhibiting a growth of 9.8%. And this all must be noted that this all was happening in spite of the COVID-19 year. Regarding the hydroelectric dam, of course, as I said, it's not related to the work of the consulates and embassies. However, as citizens, we know that the present government has planned to construct 10 dams across Pakistan by 2028, work on 2 major hydroelectric projects. Muhammad in Khyber Pakhtunkhwa and Dimer Basha in Gilgit-Baltistan has already started. Muhammad Dam is being built on Swat River to prevent flooding with a cost of 310 billion rupees. It will also generate 800 megawatts of electricity. The project is expected to be completed by 2025. And Dimer Basha Dam's cost will be around $14 billion, and it will generate 4,500 megawatt of clean energy. It is expected to be completed by 2028. अब यहाँ पे एक चीज मैं सिर्फ नोट करूंगा इससे पहले कि मैं फिर हमारे जो हाई कमीशन आर्टवर्क के ऑफिसर्स हैं उनको फ्लोर दूं.
کہ جب اکیڈیمک سیٹنگز میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ڈیموکریسیز میں اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ شروع کرتی ہے پروجیکٹ اس کا وہ پولیٹیکل بینیفٹ نہیں لے پاتی. اس لیے پولیٹیکل اکانومی آف ڈیولپمنٹ کی بیسک لاجک پڑھائی جاتی ہے اکیڈیمک سیٹنگز میں. تو یہ بھی پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کی میچورٹی کا ثبوت ہے کہ ان میں سے کچھ پروجیکٹس جو 2025 میں اور 2028 میں کمپلیٹ ہونے ہیں وہ ان پہ اتنی ہمت لگائی جا رہی ہے, اتنی انرجی لگائی جا رہی ہے, ان پہ انویسٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ ایز ایکسپیٹریٹس and as consulates who are not based in Pakistan, it's a matter of satisfaction for us کہ ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ میچورٹی کے اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ وہ اس طرح کے لانگ ٹرم پروجیکٹس جو ہے ان کو انڈرٹیک کر سکتا ہے. Now I give floor to our High Commission for ARTWA for responding to question. Over to Councillor Atiya Iqbal. بہت شکریہ سر. سر میرے پاس 2 ای میلز ہیں. ایک ہے پروفیسر عظمت اللہ صاحب کی جنہوں نے تجویز دی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ وہ اے ٹی ایم کے تھرو اپنی پینشن ڈائریکٹلی ودرا کر لیں آٹوا میں رہتے ہوئے. پریزنٹلی پروسیس یہ ہے کہ پینشن فنڈز جو مشن کو ریسیو ہوتے ہیں وہ چیک کے ذریعے دیے جاتے ہیں. چونکہ پاکستانی بینکس کینیڈا میں موجود نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے شاید ڈائریکٹ ودرال بذریعہ اے ٹی ایم جلد از جلد ممکن نہ ہو. لیکن ان کی یہ تجویز جو ہے وہ بیک ہوم ہم ضرور کنوے کریں گے. اور یہ ہماری کوشش ہے کہ جب بھی پروفیسر صاحب یا بزرگ ہمارے محترم جو ہیں وہ بایو میٹرکس یا اٹیسٹیشن کے لیے مشن تشریف لائیں تو ہم اس پروسیس کو ان کے لیے میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں. دوسری ای میل جو ہے وہ شہناز رسول صاحبہ کی ہے. آلریڈی ان ڈیٹیل آپ نے نائکاپ کا پروسیس کاؤنسل جنرل ٹورانٹو نے واضح کر دیا ہے. صبح ہماری ان کے ساتھ فون پہ رابطہ بھی ہو گیا. ان کو کوئی دقت پیش آ رہی تھی اپنے فنگر پرنٹس اپلوڈ کرنے میں. آئی ہوپ کہ ہم نے جو گائیڈنس فیسیلیٹیشن ان کو دی ہے ان کا پرابلم ریزالو ہو جائے گا. If the problem persists, so she's welcome to contact us again. So thank you very much and over to you. Now I give floor to Mr. Jambaz Khan, Consul General Vancouver. He has to respond to some questions from a participant. Over to you, Mr. Jambaz. Thank you very much, Consul General Sahab. I have a question from Ahmed Nadeem Mehman Sahab, a very active president of Pakistan Canada Association in Calgary, Alberta. Basically ان کا question ہے جب جو ہمارے passport renewal process کے اوپر that why do people need to come to the Consulate General to give their fingerprints while NICOP and NADRA related issues are being processed online. This particular issue is very peculiar to Vancouver because Vancouver deals with an area which is quite large. Starts from Nunavut, goes to Yukon Territory, Northwestern Territory, Alberta, Saskatchewan, British Columbia. So it's a huge area and اس پورے area میں about 70 to 80,000 پاکستانی مقیم ہیں. ان کے لیے آنا کافی problem ہوتا ہے when it relates to giving biometrics. It's a very valid question. اس کے اوپر Consulate General نے جو ہمارے ڈائریکٹوریٹ جنرل ہے امیگریشن اینڈ پاسپورٹ بیک ہوم ان پاکستان اس کے ساتھ we are in touch کہ 3 categories are now coming for renewal of passport to the consulate. While normal renewal is online, جو 3 categories آتی ہیں اس میں ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ کا marital status change ہو جائے and you need to remodify your passport. اگر کوئی young man who has crossed the age of 18 needs a new passport, or in case a passport is lost. In that case, the Directorate General of Immigration requires you to come for biometrics at the Consulate Generals. اس سلسلے میں Consulate General نے under the auspicious leadership of Raza Bashir Tar Sahab, we have engaged the Directorate General of Passport, Immigration and Passport in linking these 3 processes as well to the NADRA NICOP system, wherein the biometrics can be picked up from those and جو امیگریشن پاسپورٹ کا پروسیس ہے پاسپورٹ ایشو کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر دیا جائے. اس سلسلے میں ہمیں ان کی طرف اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آلریڈی ایک کمیونیکیشن آ چکی ہوئی ہے کہ یہ آلریڈی امیگریشن اور یہ نادرا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں
we are following it and we are pursuing this matter. In addition, एक general query आ रही है जिसके ऊपर again I would like to bring it to your attention is it is regarding the Roshan digital accounts and technical hiccups or technical issues which are arising for it. ख़वातीनो हज़रात, ये एक नया सिस्टम है जो अब इन वोग हो गया है और जो चल रहा है, बट इसमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं. इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वेदर आपका और उसमें रजिस्ट्रेशन का इशू है या उसमें आपका फंड ट्रांसफर, व्हाटएवर इज द इशू, प्लीज फील फ्री टू लेट अस नो. ऑल द काउंसलेट जनरल्स, वी आर इन टच विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हम ये क्वेश्चंस रेज करेंगे उनके साथ कि बराए मेहरबानी इसको आप हल किया जाए. इसकी एक मिसाल हम देते हैं, मैं देता हूं कि एक हमारे यहाँ पाकिस्तानी है गौरी साहब, उनका जो था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसमें उनको प्रॉब्लम हो रहा था. उन्होंने हमारे काउंसलेट जनरल के साथ कांटेक्ट किया, हमने उनकी रिक्वेस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भेजी. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हबीब बैंक लिमिटेड को इंस्ट्रक्ट किया एंड ही हैज बीन कॉन्टेक्टेड एंड होपफुली इन अ डे और टू या तक वो उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी. सो प्लीज रोशन डिजिटल अकाउंट्स के सिलसिले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कबाहत है, कोई दिक्कत है, तो हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे. काउंसलेट जनरल ऑफ वैंकूवर की तरफ से बस इतना ही है. आई हैंड ओवर द फ्लोर बैक टू अब्दुल हमीद साहब. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द फ्लोर. सर, ओवर टू यू. हमारे अगले स्पीकर हैं इश्तियाक अहमद आकिल साहब. और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने इश्तियाक अहमद आकिल साहब अपने कौंसल जनरल मॉन्ट्रियल हैं कि वो अपने व्यूज का इजहार करें. काफी सारी ईमेल्स उन्हें मुख्तलिफ इश्यूज पे रिसेंटली रिसीव हुई हैं. तो ओवर टू यू कौंसल जनरल इश्तियाक अहमद आकिल. सर, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. सर, ये पहली ईमेल जो है, इट सेज I wish to execute a power of attorney. My Pakistani documents expired 10-15 years ago. Can I present my Canadian documents instead of the Pakistani documents for the execution of my power of attorney? Now, essentially, Pakistan missions abroad, they administer oaths, take affidavits, and sign the power of attorney papers and other documents executed by Pakistani nationals on the basis of their Pakistani documentation. And whenever such a paper needs to be signed by the Pakistan mission, then on the basis of the Pakistani documentation, it first identifies the person, and then the desired services are provided. The documents executed by foreign passport holders, they first need to be processed according to the requirements and procedures of the passport country. So, for example, if somebody holds Canadian passport, then this would be done according to the Canadian procedures. And after the attestation of such documents by the Foreign Ministry, in this particular case, Canada, Global Affairs Canada, these documents can be presented at the concerned Pakistani mission for counter signature. Here I would like to reiterate my request, which I had made at the previous such online meeting last month, that Pakistani community members, in their own interest and benefit, may continue to get their Pakistani documentation renewed even after obtaining the Canadian documentation. Those having renounced Pakistani citizenship can get issued Pakistan Origin Card, POC, to continue enjoying visa-free entry as well as a host of other benefits in Pakistan. The second query is, this is what actually happened at this consulate general. We received a phone call over the weekend, and the caller said that they had realized that the NICOP of
their NICOPs had expired and they had seats on the weekend. So they requested that we should issue them the manual handwritten visas because of the urgency. Now, I would like to clarify that since the introduction of Pakistan Online Visa System, POVS, issuance of the handwritten visa stickers has been discontinued. And in this particular case, in fact, we asked the family to submit their visa applications online, and we did give the go-ahead within the time limit which they had, so that they could catch the flight. Now, but I would also like to clarify that holders of foreign passports, foreigners of Pakistan origin, and their families can travel to Pakistan without visa in emergencies. Para 26.3 of the Passport and Visa Manual of the Government of Pakistan, it says landing permit for 72 hours will be granted by immigration staff with prior approval of the zonal director FIA concerned to the foreigners of Pakistan origin and their families in emergency cases on production of documentary proof of Pakistan origin. So let me state this again, because this is very important, that foreigners of Pakistan origin and their families can travel to Pakistan without Pakistan visa in emergencies, and according to the visa regulations of the government of Pakistan, they can be issued 72-hour landing permit at the airport. और ये जो लैंडिंग परमिट होता है ये बाद में लाइक जिस तरह रूटीन में आप अपना वीजा एक्सटेंड करवाते हैं वहाँ पे उससे एक्सटेंड हो जाता है. The next query was, my NICOP has expired. I am not comfortable with the NADRA online application procedure and wish to apply at the Consulate General. Can I do that? अब इस सवाल के जवाब में Consul General Toronto has explained in detail. In fact, the NADRA has stopped accepting paper applications since the introduction of their online application facility. और वो जब से उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी उसके बाद पेपर एप्लीकेशंस आर नो मोर बीइंग एक्सेप्टेड, सो देयरफॉर वी कैन नॉट एक्सेप्ट सच एप्लीकेशंस. अब इसका एक दूसरा तरीका ये हो सकता था कि जिस तरह मिशंस MRP प्रोसेस कर रहे हैं इस तरह का सिस्टम अगर इंस्टॉल हो जाए, जिस तरह इसको MRP कहते हैं उसका नाम है NRC, नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर. बट लाइक यू हर्ड फ्रॉम द कॉन्सल जनरल टोरंटो, वो वहाँ पर टोरंटो में था एंड दैट टू वाज क्लोज्ड due to some reason. So this particular Consulate General, Pakistan Consulate General in Montreal, is thus unable to accept any NIC applications. All the interested individuals can apply online on the NADRA website, as has already been stated by the Consul General Toronto. The last question was, I need a certificate showing, among other things, the name of my parents and my date and place of birth. Can the Consulate General issue this certificate to me? ऐसे है कि Consulate General के पास इस तरह का ना तो बर्थ और लाइक सिटीजन का रिकॉर्ड कॉन्सुलेट जनरल के पास नहीं होता. ये हमारा मुतल्लिका महकमा जो है वो है नादरा, वहाँ पे तमाम बर्थ्स का रिकॉर्ड मौजूद होता है, मैरिजेस का होता है, डेथ्स का होता है, and they maintain like the family tree of all the Pakistani citizens. So anybody interested in getting such certificates can apply directly to NADRA. Now the desired
information. It is contained in a NADRA certificate which is called Family Registration Certificate. Family Registration Certificate में applicant का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, उसके वालिदैन के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर होते हैं, और उसकी तारीख और जाए पैदाइश भी मौजूद होती है. तो hopefully this would solve your purpose, and this can again be applied online. Not only this family registration certificate can be applied online, बल्कि एक और certificate है other than the national identity card and its different variants like NIC, NICO, Smart NIC. They of course can be applied online. In addition to that, FRC can be applied online as well as the child registration certificate. ये child registration certificate वो चीज़ है जिसको अमूमन फॉर्म बे कहा जाता था पहले, अब नादरा में उसको child registration certificate कहते हैं, CRC. So thank you very much, sir. With that, I have finished the queries which this mission had received. Thank you very much. Thank you, sir. Now I shall request High Commissioner Razab Sheikh Tarar for concluding remarks. Over to you, sir. जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब. मैं जी इख्तितामी कलमात के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह कमिटेड है to promote welfare of overseas Pakistanis, to improve connectivity with them, to improve our interface with them, to truly improve the quality of services that are being provided to them. और दिन रात इस पे जी काम हो रहा है और इसकी इंशाल्लाह आपको मैनिफेस्टेशंस नज़र आती रहेंगी. वज़ीर आज़म साहब इसमें बहुत ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं, बड़ा इस चीज़ को वो निगरानी करते हैं और उनकी अंडर हिज गाइडेंस वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑन अ 24/7 बेसिस. जिस तरह भी आपने रिसेंटली जब ये अलमनाक सानिया हुआ लंदन ओंटारियो में, तो आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ारजा की जो उसमें एक रियल टाइम में और कंटिन्यूस जो इन्वॉल्वमेंट थी, सुपरविजन थी, गाइडेंस थी, तो ये मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी भी बड़ा रीअश्योरिंग है एंड एज अ हम्बल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एज वेल. तो इसमें ये है जी कि एंड एज अ पाकिस्तानी टू अदर पाकिस्तानीज मैं ये कहूँगा कि आप अल्लाह ताला पे यकीन मोकम रखें और always have optimism in the prospects of Pakistan. Do not despair. दुनिया में अब जाहिर है जहाँ पाकिस्तान की जो महल वकूअ है, जो इम्पोर्टेंस है और जो हमारा असूली मौक़िफ़ है, उस वजह से हमें तीर तफंग का सामना भी रहता है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ वे टू रेजिलिएंट फॉर दैट. और बिल्कुल आप optimistic रहें और remain engaged, keep working for the betterment of Pakistan, keep working for the betterment of Canada, जहां आपको बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है. मैंने बारहा इस चीज़ का इजहार किया है कि मेरी जिस कैनेडियन ऑफिशियल से भी इंटरेक्शन रहा है किसी भी लेवल पे, वज़ीर आज़म से लेके और वर्किंग लेवल तक, हर एक ने पाकिस्तानियों की जो खिदमात हैं, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, उसका बरमला एतराफ़ किया है और पाकिस्तानियों को यहाँ बहुत कदर की नज़र से देखा जाता है और देखा जाना चाहिए भी, क्योंकि आपकी बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है. और बाकी ये है कि जो बाज़ दफ़ा को अनप्लेजेंट वाक़यात हो जाते हैं तो उस पर भी मिलजुल के चौकन्ना रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें और हमारे साथ भी रिमेन इन कांटेक्ट विद अस. और इंशाल्लाह ये है कि माय एसोसिएशन विद यू डज नॉट एंड विद द एंड ऑफ माय टूर ऑफ ड्यूटी. आई एम गोइंग बैक विद वेरी फॉन्ड मेमोरीज एंड वेरी सॉलिड एसोसिएशंस दैट आई हैव डेवलप्ड व्हाइल बीइंग इन कैनेडा. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी. अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो
اور آپ کو تمام جو آپ کے فیوچر انڈیورس ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. پاکستان کینیڈا دوستی زندہ باد. Thank you, sir. Today we discussed issues relating to commerce and trade, vaccination of COVID and travel to Canada, NICO, family registration certificate, child registration certificate, closure of NADRA office in Canada due to the decision of Supreme Court, increase in exports of Pakistan, power of attorney, construction of dams, and disbursement of pension to those Pakistanis who start living abroad. It was very useful discussion. We conclude the meeting here. Thank you very much, everyone, for joining us today. Thank you.